Okay, good afternoon to all the students. Attendance link is already shared in the group chat box, so you can start filling your attendance first. So, student, in today practical session, we're going to discuss two practical, which is the find out the basic component of steam boiler, and second, the find out identify the basic component of reaction turbine and impulse turbine. Okay, so we talk about the impulse turbine or reaction turbine, both are available in the gas turbine and the steam turbine. Okay, so the difference only between the gas turbine and steam turbine is that the steam turbine is operated through the steam and the gas turbine operated through the gas. Okay, so let's start. So today we're going to discuss two practicals. I'm showing you some short video regarding the different component of the steam boiler as well as steam turbine like impulse turbine and reaction turbine. Okay, why we call the impulse turbine and why we call the reaction turbine? What is the difference between the impulse turbine and reaction turbine? We're going to discuss today, as well as what is the basic definition of the boiler and how the boiler is work. We also discuss in today lecture. Okay, so remaining student join the lecture as early as possible. There is only 18 students joining the lecture. Remaining student join lecture immediately. Okay, students, as you see in this PDF, identify the component of steam turbine, sorry, steam boiler. And here is the second number, identify the component of impulse and reaction turbine. Okay, so student, identify the impulse turbine component is your second practical, and identify the reaction turbine component is your third practical. So today we're going to complete our three practical in this session, because the second practical is combination of your second and third practical. Okay, similarly, like a assembly and the assembly of the impulse turbine and reaction turbine, it is also belongs to two practical, assembly and the assembly of impulse turbine and assembly and the assembly of the reaction turbine. Okay, so one, two, three. What do you see here? This is not only three practical, it is as per our syllabus, it is a total five practical is there. Out of five practical, we discussing two practical here. Okay, so whatever the writing material I will provide in the group, so you can complete your write up. So uh, the 50% student which is available offline in the Saturday, I already shared the course material in the basic mechanical group. So students here, so first we identify the component of steam boiler. Okay, so as we I many times discuss, the boiler is a steam generator, a device by which we can generate the steam. A device by
by which we can generate the steam. Okay, so let's I share some video first so you can easily understand. You can easily understand what we do mean by the boiler and its component. So, students, for the better understanding what is the boiler, what's the introduction about the boiler, and what's its different part. So, I will share a small video regarding this reference. You can better understand what is the different part and what is the introduction, what is the definition by animated video. So, you can better understand. So for this, let I share my screen again for this video. Hello my dear friends, our topic is the boiler because boiler is a very important part of every industry. It's said at a heart of company. So this is the very important part of chemical industry and every industry. I hope like my video. इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे what is the boiler, properties of boiler, definition of boiler and components of boiler, so on. I hope like my video. Now start. What is boiler? Boiler. A boiler is a closed pressure vessel strongly constructed of steel or iron, where water is converted to steam by application of heat. जो बॉयलर होता है वो बहुत ही क्लोज्ड स्ट्रांगली बना होता है किसे स्टील और आयरन से जनरली हमारा बॉयलर बना होता है और ये वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट अप्लाई करते हैं हम इसमें और जो कि वाटर को ये स्टीम में कन्वर्ट कर देता है सो दिस द बॉयलर एंड दूसरी डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ कि क्या होगी ए बॉयलर इज बेसिकली ए क्लोज्ड वेसल इनटू विच वाटर इज हीटेड until the water is converted to into steam at required pressure. A boiler एक closed vessel है जिसमें हम वाटर को हीट करते हैं जब तक कि वो स्टीम में कन्वर्ट ना हो जाए एट रिक्वायर्ड प्रेशर पर. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बॉयलर एंड नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ बॉयलर किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना हो. नेक्स्ट सो दिस इज द डेफिनेशन स्टीम में कन्वर्ट ना हो जाए. So here, student, you can better understand what is the definition of the boiler. A boiler is a closed pressure vessel strongly constructed of the steel or iron where water is converted to the steam by application of the heat.
When we didn't get when we didn't get any required pressure, then it means it is not a boiler. We call it only a steam generator, not a boiler. So the difference is specific pressure, specified pressure or required pressure. Okay, specific pressure or required pressure. It is the main important thing. Required pressure, steam generation, required pressure. Okay, so let's continue. बॉयलर बॉयलर किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है? एवरी कंपोनेंट्स हम एक टेबल के फॉर्म में स्टडी करेंगे। जैसे कि ये डायग्राम लिए मैं आपको टेबल की फॉर्म में बता देता हूँ कि एवरी कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं जिनसे ये मिलकर बना होता है। फर्स्ट बॉयलर केसिंग, सेकंड ब्रिक लाइनिंग, थर्ड बॉयलर सेल, फोर्थ फायर ट्यूब्स, फिफ्थ वाटर, सिक्स्थ वाटर रिटर्न ट्यूब्स, सेवंथ वाटर लेवल इंडिकेटर, एट होस्ट पाइप्स, नाइन्थ स्टीम, टेंथ होस्ट गैस टेम्परेचर गेज, 11 होस्ट गैस प्रेशर गेज, 12 स्टीम टेम्परेचर गेज, 13 स्टीम प्रेशर गेज, और 14 स्टीम टैब, 15 स्टीम ड्यूम, और 16 सेफ्टी वाल्व, 17 फ्लू गैस टेम्परेचर गेज, 18 फ्लू गैस प्रेशर गेज, 19 बॉयलर पैसेज डोर, 20 combustion chamber, 21 burner, 22 feed water temperature gauge, 23 feed water pressure gauge, Whose mic is on? Mayur Ganguly. What is your problem? Mayur Ganguly. Mute your mic. Okay, so students, you can see here total 25 parts is shown here. Okay, total 25 parts is shown here. Boiler casing, bricks lining, boiler shell, fire tube, water return tube. So these are the parts which is essential for a boiler. So we can say that these are the parts, like we can say these are the part of boiler mountings. So we can uh, specify or pick out the point which is important for our previous session, which is important for our previous session. So students, be careful and make a note, make a screenshot for your notes. Uh, what is the important factor or important slide for your next lecture or particular this subject? Okay, so I'm also sharing this video to you, but you make a screenshot for your rapid preparation for your exams. Okay. 24 feed water inlet, 25 बॉयलर स्पोर्ट्स। दिस इज़ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ बॉयलर। जो बॉयलर बना होता है इन कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है कंप्लीटली बॉयलर। बॉयलर माउंटिंग कंपोनेंट्स होते हैं वो 7 होते हैं, जिन पर बॉयलर माउंट होता है वो 7 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? सेफ्टी वाल्व, फीड चेक वाल्व, प्रेशर गेज एंड ड्रम वाटर लेवल गेज, ब्लो डाउन वाल्व एंड मैन स्टॉप वाल्व। जो सेफ्टी वाल्व क्या होती है, नाम से ही पता। So students, these are the 7 most important boiler mountings. Okay, because it is very much important, so you can remember it, because in the all the examination the boiler mountings and boiler accessories every time asked. Okay, so you can say that there is these 7 most important boiler mountings. Without these uh, component we can't operate a boiler. Okay, like a safety valve, the function of safety valve is to blow off steam when the pressure is the boiler exceed the working pressure. Means आपका boiler में जब
स्टीम का प्रेशर वर्किंग प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, सेफ्टी वॉल्व ऑटोमेटिकली ओपन होता है और जो एक्सेस प्रेशर होता है द प्रेशर इज रिमूव्ड फ्रॉम द boiler. Okay, feed check wall. What is the feed check wall? What is the feed check wall? Yes, any question? Shinde, Gorak Shinde, any question? Gorak Shinde? Gorak Shinde, do you have any question? Okay, no problem. We just start again. So, students, what is the feed check valve? A feed check valve is used to control the supply of water to the boiler and also act a non-return valve. Okay, what do you mean by non-return valve? Means the supply is one-sided only. Okay, like your valve used in the uh, bike tire or automobile tire. What happened? There is a non-return wall कि आप एयर वन साइड से ही इंटर होता है और रिटर्न नहीं होता है. दैट इज द नॉन रिटर्निंग वॉल विच इज यूज इन द फीड चेक वॉल. सो क्या करते हैं, फीड चेक वॉल के थ्रू हम वाटर को इंसाइड करते हैं इन द बॉयलर एंड देन इट इज नॉट रिटर्न टू फ्रॉम दैट सेम वे. Okay, so that's we use the non-return wall there. Okay, the next is the pressure gauge. Pressure gauge indicate the pressure of steam in a boiler. It is a very important equipment which is used in the boiler because if the pressure is increased, then what happens? You lost your safety valve. Okay, and there is a some cost which is needed to replace this safety valve. So each and every time if uh, you not consider the excess pressure, then each and every time your safety valve is blast and broken, then what happens, it is not economically for the industry or organization. So pressure gauge is the indicate the where is your pressure is within this working pressure or exceeding the working pressure. So it is an important device. Okay, drum water level gauge. Okay, the function of water gauge glass is to indicate the water level in the drum. Okay, so because the minimum level and maximum level is there, like you using the immersion rod, there is also an indication the this is the minimum level of the water and this is the maximum level of the water. Uh, Marking system is available when we use the immersion rod for heating the water for bathing or for the washing the cloth. So the immersion rod have also to mark the minimum water level and maximum water level. Similarly, the water level indicator is show the minimum requirement of water which is must be available in the water drum. Okay. So next is the blow down valve. Blow down valve are designed for the continuously used for the control the construction of the dissolved solid in the water. Okay, so blow off cork is used to design the continuous control. जो आपका non dissolving particles in the water है वो उसको separate करता है. Blow डाउन वॉल. सो जो नॉन डिजॉल्विंग वाटर है, जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स
हम बॉयलर का प्रेशर इंडिकेट्स करते हैं। दिस इज़ द प्रेशर गेज एंड वाटर ड्रम लेवल गेज। जो ड्रम में एक ग्लास टाइप की एक वो होती है जिससे हम वाटर का लेवल इंडिकेट करते हैं। दिस इज़ द ड्रम वाटर लेवल गेज। And fifth or sixth, blow down valve. Blow down valve are designed by continuous use to control the concentration of dissolved solids in the boiler water. And सेवन्थ, मैन स्टॉप वाल्व। मैन स्टॉप वाल्व पे एक्चुअली क्या होते हैं कि हम फीड को सप्लाई करने यानी शुरू स्टार्ट करने एंड ब्लो ऑफ करने बंद करने के लिए हम मैन स्टॉप वाल्व का यूज करते हैं। स्टॉप एंड अलाउ द फीड स्टीम ऑफ द boiler. So this is the main components of the boiler. So जिन पर वो माउंट होता है, this is the basic components of the boiler. Next is proper. Student, from out of these seven main component, one more important component is there, that is the stop wall. Okay, that is the stop wall. Just 1 minute. The boiler. First property of Okay, so out of that seven component, which is here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, the manhole is also very important for the cleaning and maintenance purpose, but we can't consider manhole as a boiler mounting because we don't mount it on the boiler. This is not separately, it is a part of boiler. Okay, manhole is a part of boiler, it is not mounting. So manhole is not a mounting, it is a fixed part of the boiler. Okay, that's why the manhole is not involved here. Okay. next is properties of the boiler. First property of the boiler is safety, because safety is the main property of the boiler. क्योंकि इसको हम बहुत ज़्यादा हाईली प्रेशर पर ऑपरेट करते हैं। सेफ्टी इज़ द मेन प्रॉपर्टी। ऑपरेटिंग कंडीशन आर सेफली होनी चाहिए एंड एसेसिबिलिटी वेरियस पार्ट ऑफ बॉयलर शुड बी एसेसेबल फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। वो बिल्कुल रिपेयर एंड मेंटेनेंसली होनी चाहिए। कैपेसिटी कैपेबल ऑफ सप्लाइंग हीट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। वो उसी के अनुसार उसकी हीट कैपेबल हो जिससे हमें हीट चाहिए। एफिशिएंसी, वो मिनिमम हीट फ्यूल जलाने पर इन द फर्नेस में वो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करे। दिस इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल। एंड वो उसकी सिंपल कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए और जो इनिशियली कॉस्ट है एंड मेंटेनेंस कॉस्ट वो लो होनी चाहिए। वो एंड क्विक स्टार्ट एंड लोडिंग, वो जल्दी स्टार्ट हो जाए एंड जल्दी ही वो फ्लिप हो जाए। सो So students, here we can see the main or important property of the boiler, which is essential and very much important for the processing of a boiler. The first case, because the boiler is operating in a very high temperature and very high pressure, so the chances of accident in the boiler industry or power plant industry is much higher. So we must focus on the safety. The boiler should be safe under the operation condition. Okay.
And what is the operating condition? The operating condition is the high pressure and high temperature. Okay, and both are dangerous for the human. Okay, the high temperature and high pressure both are the dangerous for the human life. So the safety is a very important property of the uh, boiler when we operating it. Okay, accessibility. Okay, what do you mean by the accessibility? The various part of boiler should be accessible and repair and maintenance. So accessibility is meaning that whatever the parts and component of boiler is easily understandable and easily available in the market for the replacement. Easily available in the market for the replacement and maintenance. Okay. A capacity. Next is the capacity. Capacity should be capable for the supplying the steam according to the requirement. Okay. So we can select or we can choose our boiler on the basis of our application. Okay, like we can categorize the boiler on the basis of capacity. So medium low pressure boiler, medium pressure boiler, and high pressure boiler. Okay, so we can categorize like that. So similarly, we can use low pressure boiler, medium pressure boiler, and high pressure boiler according to our particular application are used. Okay, what is the efficiency? Should be able to absorb a minimum amount of heat produced due to the burning of fuel in the furnace. Okay, the meaning of this, so we can completely, our fuel in the furnace is completely utilized, means the combustion of fuel is fully utilized or fully combust fuel we needed, which is easily ignite and completely fire out in the combustion box or combustion chamber. Okay, it should be simple in the construction. Okay, because why we needed the simple in construction? Because we can easily understand what is the construction of the boiler, and we can easily understand the operating of the boiler, so anyone can understand what is the fault is generated and tell the technician for the replacement or the maintenance. Okay, it is its initial cost and maintenance cost should be low. Okay, so uh, according to our application and our use, the initial cost of the boiler, the initial cost of the boiler should be minimum. Okay, so we can easily install the boiler for our application. Okay, Sir, oh, sir. yes, Sir, yes. please explain efficiency again. Efficiency. Efficiency. Okay, the efficiency of the boiler is whatever the fuel we use, जो भी फ्यूल हम यूज करते हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए. ठीक है, अभी जैसे क्या कहते हैं कि हम एक वुड का टुकड़ा लेते हैं, लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं और उसको बर्न करते हैं ना, और वो प्रॉपरली बर्न नहीं होता है. ठीक है, क्या होता है कि सम पार्ट ऑफ द वुड इज अनबर्न. ओके, क्या रहता है कि वो रह जाता है, तो उसका प्रॉपर बर्निंग नहीं हुआ, जिसकी वजह से जितनी हीट हमको वुड से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई. तो इन द कंबशन चैम्बर, जो भी बॉयलर का कंबशन चैम्बर होता है, जितना भी हम उसमें फ्यूल रखते हैं वो कंप्लीटली बर्न होना चाहिए. ठीक है ना, तो अगर वो कंप्लीटली बर्न होगा तो हमको मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो हमारे लिए इफिशियंसी होगी कि हम जितना इनपुट दे रहे हैं उससे मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है. बिकॉज द डिफिनेशन, द फार्मूला फॉर द इफिशियंसी इज द आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट. ओके, तो मैक्सिमम आपका क्या कहते हैं कि जो भी बॉयलर है उसकी इफिशियंसी हाई होनी चाहिए. तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ एनी बॉयलर है वो कितना है आपका
60 to 65%, 70% तक ही maximum efficiency है. So we can try to touch that efficiency because there in the universe there is nothing to 100% efficient. ठीक है ना. दुनिया में कोई भी ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, मैकेनिकल इक्विपमेंट नहीं है या फिर कोई भी डिवाइस नहीं है जो कि 100% एफिशिएंट है. तो जितना भी मैक्सिमम एफिशिएंसी हम गेन कर सकते हैं हम गेन करते हैं. ठीक है ना. तो हम ट्राई करते हैं कि जो भी फ्यूल हम यूज कर रहे हैं वो 100% उसकी बर्निंग हो जाए. क्योंकि क्या कहते हैं कि अगर हमने मान लीजिए एक 1 kg वुड को जलाया तो उसमें क्या कहते हैं कि वो पूरी तरह जलने के बाद भी उसमें क्या रह जाती है, ऐश रह जाती है, उसकी राख रह जाती है. तो उसका वेट कुछ होगा. मान लीजिए हमने 1 किलो क्या कहते हैं कि वुड जलाया तो उसकी जो भी ऐश रिमेनिंग रहती है उसका वेट मान लीजिए कितना 100 ग्राम है. ठीक है ना. 100 ग्राम या 50 ग्राम है. तो क्या हुआ, तो ये 50% तो रिमेनिंग रह गया ना, ये यूज नहीं हुआ. तो उसका अगर हम देखेंगे तो वो पूरी तरीके से बर्न होने के बाद भी उसका क्या कहते हैं कि जो वेस्ट है वो रिमेनिंग रह जाता है. तो 100% हमें एफिशिएंसी तो मिलेगी नहीं. तो जो 100% एफिशिएंसी मतलब मैक्सिमम जितनी, क्योंकि 100% नहीं मिलती तो मैक्सिमम जितनी मिल सकती है हम उसके लिए ट्राई करते हैं. तो मेन मीनिंग यही है कि अगर हमारा प्रॉपर कंबशन होगा तो हमारी एफिशिएंसी हाई हो जाएगी. देन वी कैन ट्राई फॉर दैट. ठीक है ना. तो ये तो वन लॉस हुआ कि अगर आपको 1 किलो का लकड़ी जलाते हैं, 1 kg का लकड़ी जलाते हैं तो उसमें से सम एसेस होता है. फिर उसके बाद जो हमारा बॉयलर की वाल्स है और क्या कहते हैं कि ट्यूब्स है उसके थ्रू, क्योंकि वो सम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं. अभी जैसे क्या आपका कोई क्या कहते हैं कि सॉस पैन है या प्रेशर कुकर है तो क्या कहते हैं कि जब हम उसको हीट देना स्टार्ट करते हैं तो सम हीट इज एब्जॉर्ब बाय योर प्रेशर कुकर एंड सॉस पैन. उसके बाद हीट ट्रांसफर करना शुरू करता है वाटर को. तो जो हीट हमने दिया क्या है उसका सम पोर्शन सम पार्ट तो आपका जो प्रेशर कुकर है या फिर सॉस पैन है उसके थ्रू एब्जॉर्ब हो गया है ना. तो हीट पूरी तरीके से तो ट्रांसफर हो ही नहीं, उसका सम पार्ट ट्रांसफर हुआ. तो हम क्या कहते हैं कि ऐसे मटेरियल और मेटल्स को लेते हैं जिनकी हीट कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से जो हीट एब्जॉर्बेशन जो हीट एक्सेप्टेंस है फ्रॉम द प्रेशर कुकर और सॉस पैन और द इक्विपमेंट इज मिनिमम. ओके. तो इस तरीके से हम एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं. ओके. So these are the main property like safety, accessibility, capacity, efficiency, simple in construction, initial cost and maintenance cost should be low. Okay. So next. So this is the properties of the boiler and next is classification of the boiler. boiler का classification हम 6 कैटेगरियों के अनुसार करते हैं. फर्स्ट अकॉर्डिंग टू एक्सिस के अनुसार, सेकंड अकॉर्डिंग टू ट्यूब्स, and third is method of fabrication, fourth nature of fuel used in, and fifth working pressure, and sixth circulation method. This is the sixth method according to classify in this, and इनके भी सब पार्ट हो. So students, here we can see. Now we can discuss the classification of the boiler. So we can classify the boiler in the base of these 6 category. Okay, these 6 category. Okay, so what is this category is we can observe that so first based on the boiler ड्रम, जो आपका बॉयलर ड्रम होता है उसकी लोकेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग पे करते हैं. दैट इज द
based on the boiler position or boiler house. That is the horizontal, vertical, and inclined boiler. Second is based on the passage through the boiler tube. Okay, based on the passage through the boiler tube. So, on the basis of that, fire tube boiler and water tube boiler is there.